Hello, Achu. Let's read out the question first. A direct current of 4 ampere and an alternate current of peak value 4 ampere passes through 3 ohm and 2 ohm resistors respectively. Find the ratio of heat generated in two resistance in the same time interval. So basically यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक डायरेक्ट करंट है जिसे IDC करंट is equals to 4 ampere and the peak value of the current for AC source is I naught, which is also is equals to here. These are passing through the resistance. तो फर्स्ट केस के लिए रेजिस्टेंस है R1 3 ohms एंड सेकंड केस के लिए रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R2 जो कि है 2 ohm. सो हम बताना है रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड इन दिस टू रेजिस्टेंस क्या होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की concept which we are going to use here for this question. So as we remember that the formula of heat generated is given by H is equals to I square times of RT. So first of all we will calculate this for DC supply, that is direct current. So for DC supply जो हीट जनरेटेड है वो हो जाएंगी H1 is equals to the current I1 whole square times of R1 into T. So this will be equals to 4 amperes that whole square multiplied by resistance है 3 into time will be as it is. So this will comes out equals to 48 times of T. Similarly हम second case को consider करेंगे, that is for AC circuit. सो एसी सर्किट में जो करंट होगा वो रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू करंट होगा, दैट इज IRMS होगा. सो बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला जो हीट जनरेटेड होंगी वो हो जाएंगी H2 इज इक्वल्स टू I स्क्वायर ऑफ RMS करंट टाइम्स ऑफ R2 into T. सो दिस विल बी इक्वल्स टू ना IRMS इसका फॉर्मूला हमें पता है, which is nothing but equals to the peak value of current divided by under root 2. So यदि मैं यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये हो जाएगा I नॉट का होल स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस R2 है 2 इंटू टाइम T. यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ सो हीट जनरेटेड इन AC circuit this will comes near about 16T, but as per the question we need to find the ratio of its. So taking the ratio H1 by H2, this will be goes to 48T divided by 16T. यहाँ से T से T cancel हो जाएगा, 16 3 is 48. That means the ratio of H1 is to H2. This will comes out equals to 3:1, and therefore this is going to be the required answer to our question जो कि हमने solve किया है by using the formula of heat generated से. Now according to given option, option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.